Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is Learning Never Ends. In my previous video, I have discussed all the examples as well as all the in-text questions of this chapter number 9, class 9, Force and Laws of Motion. In my previous video, I have discussed part 1, that one is part 1 also. मैं उसका डिस्क्रिप्शन अपने सारी वीडियोस का इस चैप्टर के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। क्लास 9 साइंस के नेम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें से भी ईजिली वीडियोस देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स कराए थे फ्रॉम 1st to 11। दिस इज़ दी पार्ट 2, सो इसमें मैं कराऊँगी, दिस इज़ पार्ट 2, so after 11, so it is question number 12 is theoretical, so 13 because I am only discussing the numericals purpose, right? Because mostly बच्चों को numericals में प्रॉब्लम होती है, theoretical तो वो लर्न कर लेते हैं, right? Now 13 question. Yes. So a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. So u equal to 10 meter per second initial velocity and v equal to 5 meter per second final velocity of a hockey ball. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. So change in momentum is equal to, momentum is mv, so mv minus u is the formula. Here m is 200, v is 5 minus 10, that is 200 into minus of 5, that is minus 10 minus 1000. दिस इज़ दी चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला की यूनिट क्या होती है? ग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट? डन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14th. Question number 14 is a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second. So mass is 10 gram. That traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest, means u equal to 150 meter per second initial velocity and v equal to 0 meter per second. Now time is given here 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. So s equal to question mark, here v, u, t all are given. So I can write 2as. No, acceleration is not given, but acceleration मैं find out कर सकती हूँ v minus u upon t से. So v is 0 minus 150 upon 0.03, that is point, then 2 zeros. So it is minus 15 by 3 into 10 to the power 3, right? So it is the distance. Sorry, acceleration. Now s equal to ut plus half, you can write 2as equal to v square minus u square. 2as is 2, a is minus 15 by 3, s is unknown, s हमें find out करना है, 0 minus 150 of square. So s minus, that is 30 upon 3, that is minus 10. Here minus of 150 square, that is 22500. So s equal to minus minus cancel out, 22500 upon 10. So it is 2250 meter. Done. So in my 14th question distance has done. Now magnitude of force. So F equal to ma. Here mass is 10. Acceleration is, mass is in
ग्राम, सो किलोग्राम में करने के लिए इसको अपॉन 1000 करेंगे, 10 अपॉन 1000. एक्सेलरेशन इज -15 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ सो ये कैंसिल आउट हो गए. देन माइनस ऑफ 150 अपॉन 3 that is minus of 550 Newton. This is the force. So F equal to -50 is the Newton is the answer. Done. Now question number 16th. Now question number 16th. Sorry, 14th has done. 15 is here. An object of mass 1 kilogram. So mass equal to 1 kilogram. Traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and strikes its mass. Calculate the velocity of the combined. Okay, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of this collides with and sticks to a. So u1 is equal to 10 meter per second. And u2 is 0 because it is stationary, so u2 is 0. They both move off together in the same straight line. m2 is also given here 5 kg. एक साथ जा रहे हैं, it means let v1 equal to v2 equal to v. Now according to the law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Here m1 is 1, u1 is 10 plus m2 is 5, u2 is 0. Here m1 plus m2 means 1 plus 5 and this is v1 v2 is v. So 10 plus 10 upon 6 equal to v 5/3. So 5/3 meter per second square. इसको आप मीटर पर सेकेंड, सो 5/3 मीटर पर सेकेंड इज दी वेलोसिटी. आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं इसे. नाउ कैलकुलेट दी बोथ द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. सो बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम is equal to mu m1 u1 plus m2 u2. राइट, here u2 is 0, so ये टर्म 0 हो जाएगी. m1 is 1 into 10, so it is 10. This is 15th question, right? So 15th question, kilogram meter per second is the unit. Now this is the before impact. Now after collision, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, और यू कैन से आफ्टर इम्पैक्ट m1 v1 प्लस m2 v2. हियर m1 प्लस v1 इज 1 प्लस 6 एंड v1 प्लस v2 v गिवन है 5/3, सो इट इज़ 1 प्लस 5 सॉरी. सो 6 इंटू 5/3 दैट इज़ ऑल्सो 10. ये हमें पता भी है कि m1 u1 m2 u2 के इक्वल होता है. देखो यहाँ पर भी सेम आया है हमारी वैल्यूज, तो हम इससे हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम m equal to 100 kilogram is accelerated uniformly from a velocity of, initial velocity is given 5 meter per second and v is given 8 meter per second and t is given 6 seconds. Right, calculate the initial and final momentum. So initial momentum is mu because initial mass तो सेम ही रहता है and initially हमारी velocity क्या होती है, initial velocity. So mu that is 100 into 5, that is 500 kilogram meter per second is the unit. Now final momentum is equal to mv, that is 100 into 8, that is 800 kilogram meter per second. Also find the magnitude of the force. So F equal to m v minus u upon t. Here m is 100, v is 8 minus 5 upon 6. 8 minus 5 is 100 into 3, so 50.
So F equal to 15 Newton is the answer, right? Now last question, that is 18th question. Here, how much momentum will a dumbbell of mass, so mass is 10 kilogram, transfer to the floor if it falls from a height s equal to 80 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80/100 दैट इज 0.8 मीटर. डन. मास ऑफ 10 kg, ट्रांसफर दिस, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So it is positive because downward means in the same direction of the gravitational force. So it is same है तो plus, otherwise negative, right? So it is positive. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it is, right? Okay. So here is this momentum find out करना है हमें. So u इक्वल टू 0 बिकॉज वो गिर रही है तो पहले तो स्टेशनरी कंडीशन में होगी. नाउ यूजिंग थर्ड लॉ इक्वेशन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as. सो 2a is 10, s is 0.8 इक्वल टू v स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर माइनस 0 ऑफ स्क्वायर. So that is 20 into 0.8 equal to v square. That is 16 equal to v square. So v equal to root of 16. 16 को हम LCM लेंगे तो आएगा 2 into 2 into that is this. So 4 meter per second is the velocity here. Done. नाउ मोमेंटम फाइंड आउट करना था तो मोमेंटम इज एम वी माइनस यू. हेयर एम इज 10, वी इज 4 माइनस 0 दैट इज 10 into 4 दैट इज 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सॉरी, मीटर पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. Thank you so much guys for watching my video. If there is any query then please comment on my video section. This is the part 2 and part 1 मेरे description box में है. उसमें 1st से 11th क्वेश्चन तक है और इसमें 12 से 18 तक. Thank you so much for watching. Best of luck.